Okay, class 7th. Good wishes to all of you. I am Meenakshi Chauhan, your bio teacher, and today we are going to do a lecture on a topic called as allergy. So I hope you all are aware about this topic in your books. So let's get started with this topic. First of all, tell me what is allergy. कभी किसी को हुई है allergy? Anyone? ऑब्वियसली हम में से किसी ना किसी को कभी भी किसी भी टाइम पे एलर्जी हुई होगी, राइट? एंड वी ऑल हैव सफर्ड फ्रॉम दिस at a particular time frame. Maybe some of you are allergic to some food item, or can be allergic to any kind of environmental cues like pollen grains and whatever. Like I am allergic to trees. Like whenever I go out in a garden or a park, so I get rashes on my skin, I get itching. So allergy is basically you can say it hypersensitivity. We can call it as hypersensitive reaction. ठीक है बच्चों, hypersensitive reaction बोल सकते हैं इसे. मीन्स आपकी जो स्किन है, आपकी जो बॉडी है, वो ओवर रिएक्ट कर रही है, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर. इट इज हाइपर सेंसिटिव एंड सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स सम आइटम्स. ओके, so that is why we are dealing with this chapter in much more detail, because it's very important topic. Clear? So let's get started with the allergy. So what are allergic reactions, which I was telling you just now? क्या होते हैं allergic reactions? तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करता है. इट प्रोड्यूसेस सम रिस्पॉन्सेस which are called as immune responses. So basically the immune responses produced by our system against a substance which produces allergy is called as allergic reaction. I told you allergy जो produce कर रहा है उसको प्रोड्यूस करते टाइम जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज एलर्जिक रिएक्शन. तो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ एन एलर्जन. लाइक सपोज आई टोल्ड यू एन एग्जांपल, व्हेन आई वाज गोइंग आउट इन अ पार्क and I immediately, like after some time, I get the skin rashes, the redness on my skin. Okay, so why I was getting that redness? Because of some allergen was present in the environment and I was very sensitive towards that allergen. So that is why my my immune system reacted against that particular allergen, and it created an immune response which automatically gave a reaction that is an allergic reaction. ये हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं एलर्जी के टाइम पे. तो वही जो केमिकल्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं. आपको पता है जहां भी केमिकल्स होंगे तो रिएक्शन तो होगी ही होगी, ठीक है. सो बेसिकली दीज रिएक्शंस में अकर व्हेन एनी एलर्जन एंटर्स आवर बॉडी थ्रू वेरियस रूट. तो किसी भी रूट से आपकी बॉडी में एलर्जन एंटर कर सकता है, राइट? So like many people, they develop sneezing, nasal congestion, watery or red eyes whenever they encounter any kind of allergen. Like allergen can be a pollen grain, it can be a dust particle, it can be a mites in the air. Okay, so we'll discuss in detail one by one that why this immune response is produced and what are the symptoms. Why do we get these kind of symptoms and all? Okay, so these all things they can act as allergen. Clear to all of you? Okay, moving on to next, we are now studying what are allergens. Allergens होते क्या है? So allergens are basically the antigens. So मैंने यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है, एंटीजन. So एंटीजन क्या है? एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है. एंटीजन कैन बी एनी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट नहीं होता, right? It is a foreign substance. It is not present in our body from from very long time. So dust कभी कभी आता है, pollen grains कभी कभी आप encounter करते हो, drugs or the fur of any kind of animal. जैसे if you have dogs at your home or any kind of pet at your home, so at one point of time they lose their hair, they may lose their fur, and because of the air, the fur moves in rotates in the air currents.
So at that time you can inhale those furs, or you can inhale those small hair which you cannot see from your eyes. So these may cause any kind of allergy to your body. Okay, so these are actually called as allergen. Okay, or you can say them antigens. Like you can see in the picture, they can be food allergen also. Like sometimes the people are also allergic to milk, eggs, soybeans, sesame seeds, wheat, nuts, peanuts, fish, and shellfish. So mostly shellfishes are also very allergic. Some people are very allergic to shellfishes, and some of people are maybe allergic to milk, because milk has a sugar called as lactose. So some people are also allergic to lactose, or you can call them as lactose intolerant. Okay, eggs में एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन. Some people are allergic to albumin, right? So like in milk it is lactose. Some people are allergic to albumin which is in eggs. And wheat में क्या होता है? wheat में बताओ क्या होता है? gluten. क्या होता है? gluten. Some people are allergic to gluten. उनको wheat जो है वो digest नहीं होता ठीक से. So these are the type of allergens which are present in our daily life, and when we encounter them, we may end up having allergic reaction. Okay. Okay, so now what are these common allergens? There are different type of allergen. Like we have animal products, foods, and pollen grains. Like in the animal products we have fur, I told you, wool, sometimes dust mite excretion, and the body parts of cockroach. हमें दिखते ही नहीं है, बट ये डस्ट में प्रेजेंट होते हैं, और हमारी नोज जब इनको इनहेल कर लेती है तो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है. ओके, ऐसी फूड्स में मैंने आपको बताया एग्स, पंपकिन, कॉर्न और मेज. कुछ लोग कॉर्न से बहुत ज्यादा जो है वो इंटॉलरेंट होते हैं. वीट में भी कई बार लैक्टोस इंटॉलरेंट हो जाता है, एंड समटाइम ग्लूटेन इज ऑल्सो देयर, वन ऑफ द रीजन ग्लूटेन. ओके, सो ग्लूटेन भी एक मेन रीजन है. I'm writing it again. So gluten is also, some people are gluten intolerant. Peanuts, almonds, legume, peas, milk, seafood. Seafood से तो बहुत सारे लोग intolerant होते हैं. They are like, seafood can be very allergic to some people. Like some people have very great type of allergic reaction when they consume prawns. So one of my family member is very allergic to prawns. So once he ate the prawns, and his throat was very, like he was feeling that his throat is itching inside. So it was very bad situation. We were all panicking at that situation. And when we went to a doctor, he said, you have an allergy towards prawns, so please stop eating it. Okay, so that's how we came to know that he's allergic to prawns. Okay, so that is about the seafood. Now we come on to the pollen grains, like the nettle pollen grain, congress, grass, and ragweed pollen. Okay, so anyone of you who knows what nettle pollen is? Nettle pollen is basically a type of leaf. Okay, so nettle is basically a type of leaf which are mostly present in UK में हमें मिलता है. So it is in the month between June and August. So जो nettle होता है mostly इंग्लैंड के एरियाज में हमें मिलता है. तो नेटल्स जो होते हैं मोस्टली सूप्स और पास्ता में लोग यूज करते हैं, उनको स्ट्यू करने के लिए, बेसिकली उनका सूप बनाने के लिए. तो सम पीपल आर वेरी एलर्जिक टू नेटल्स ऑल्सो, राइट? And they are also come in the category of weeds. So some people may be allergic to nettle pollen grains. And now what is congress pollen grain? कांग्रेस पॉलन ग्रेन क्या होता है? ये देखो नाम कितना अजीब है इसका. तो कांग्रेस पॉलन जो होता है, इट इज बेसिकली अ ग्रास. कांग्रेस ग्रास बोलते हैं इसको हम लोग गाजर घास भी कहते हैं. थोड़ा सा डिफरेंट है गाजर घास. इसको हम लोग ये बहुत कॉमन स्पीशीज होती है हमारे इंडिया में. तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम है कांग्रेस ग्रास का, वो है राइटिंग हियर Parthenium. It is Parthenium,
हाइस्ट्रोफोरस, हाइस्ट्रोफोरस, क्लियर। तो ये पार्थिनम हाइस्ट्रोफोरस स्पीशीज का होता है कांग्रेस ग्रास, और इससे पॉलन ग्रेन जो प्रोड्यूस होते हैं उससे बहुत सारे लोग एलर्जिक हो सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट है रैगवीट पॉलन, ठीक है। अब रैगवीट पॉलन क्या है, एनीबडी एनी आइडिया? सो रैगवीट पॉलन ग्रेन एलर्जी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो बेसिकली जो रैगवीट्स होते हैं वो हमारा बहुत कॉमन है, ज़्यादा मीन्स हर एरिया में काफ़ी कॉमन होते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं हमें रैगवीट्स, ठीक है। तो रैगवीट्स क्या है, बेसिकली ये एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं और मोस्टली हमें इंडिया में भी मिल सकते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं रैगवीट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म में आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो these are flowering plants and they are basically they produce the flowers which are having aster shape. So they are also called as, they are basically come in the family called as aster family. So you for just now you can just remember that these are flowering plants, clear. Next we come on to the, अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट जो है सनलाइट। समटाइम्स सनलाइट भी जो यूवी रेडिएशंस होते हैं, समटाइम पीपल आर वेरी एलर्जिक टू यूवी रेज, लाइक आई एम आल्सो एलर्जिक टू यूवी रेज ऑफ सन, और यू कैन से सन रेज से मैं एलर्जिक हूँ। मतलब समर्स के टाइम पे आई कैन नॉट गो आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज आई गेट माई स्किन immediately turns very dark whenever I go out in the sun, and I develop very like itching on my skin. A lot of problem are also there, like the color of my skin turns really dark. So strong sunlight sometimes is very very harmful for some people. And dust which contain pet waste, pieces of dead cockroaches, mold, spores, dead skin, dust mite. तो dust में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें नहीं पता डस्ट में क्या क्या है, इट कैन कंटेन एनीथिंग बिकॉज कितना कुछ होता है डस्ट में। तो डस्ट में हमें कुछ दिखता नहीं है एक्चुअली, बट व्हेन वी इनहेल इट वी लैंड अप विद वेरी सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। माइट्स क्या होते हैं, बेसिकली फीकल मैटर कंटेन्स प्रोटीन and they can cause allergy. There are some protein in the mites from fecal matter. They contain some protein which causes allergy. तो fecal matter जो होता है ना, वो होता है basically mites, ठीक है। तो ये fecal matter मोस्टली हम जो वेल टू डू लोग होते हैं, जिनके फैमिली में मतलब अच्छी जगहों पे घर है, जिनके आसपास कोई ज्यादा गार्बेजेस स्टोर्स नहीं है, तो उनमें ये ज्यादा नहीं होता। लेकिन जहाँ पर सपोज अगर आप ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पे माइट्स बहुत कॉमन है, ऐसे एरियाज जहाँ पे ऑलरेडी बहुत गंदगी है, तो इन दोज टाइप ऑफ प्लेसेस यू मे इवेंचुअली गेट द एलर्जी बिकॉज ऑफ माइट्स। ओके, सो विल डिस्कस व्हाट दीज माइट्स आर एंड हाउ दे आर कॉजिंग एलर्जीज। नाउ वी हैव द एंट्री रूट्स ऑफ एलर्जन। अब एंट्री रूट्स क्या है वही एलर्जन की। एलर्जन किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में आ सकता है। इसको हम इनहेल भी कर सकते हैं, इसको हम इंजेस्ट भी कर सकते हैं, स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी में डायरेक्टली। ओके, या तो हो सकता है वो मेडिकेशन है कोई, जैसे डॉक्टर ने आपको कोई मेडिकेशन दी एंड यू आर एलर्जिक टू दैट मेडिकेशन, तो एट दैट टाइम ऑल्सो इट कैन एंटर टू योर बॉडी। एंड बाय एन इंसेक्ट स्टिंग, जैसे सपोज किसी इंसेक्ट ने आपको काट लिया, स्पाइडर हो गया, बी हो गया, ठीक है, किसी भी इंसेक्ट ने आपको बाइट कर लिया, तो दैट इज ऑल्सो अ एलर्जन। ओके, ये ऐसे भी आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। ओके, सो एलर्जेंस दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन लाइक दीज कॉजेज रेडनेस, इचिंग, ब्लिस्टरिंग। तो अगर स्किन के कॉन्टैक्ट में कोई एलर्जन आ रहा है तो मोस्टली वो क्या कर सकता है, रेडनेस कर सकता है, इचिंग, क्योंकि वो स्किन में सुपरफिशियल है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है आपकी स्किन पे। इसको हम लोग बेसिकली वो ये भी बोल, जैसे आप बोलते हो ना आपकी स्किन में एक्सटर्नली आ रहा है, तो इट इज नॉट प्रेजेंट इंटरनली, इट इज प्रेजेंट एक्सटर्नली, ठीक है। तो इन दिस इट कैन कॉज रेडनेस, इचिंग, ब्लिस्टरिंग। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसको स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। डर्मा मीन्स स्किन एंड आइटिस मीन्स स्किन का इन्फ्लेमेशन। स्किन में जब कोई ऐसी कंडीशन होती है तो स्किन की इन्फ्लेमेशन को